और बहुत सारे ब्लॉग्स और बहुत सारे फूड लॉग्स और बहुत सारे ट्रैवलॉग्स लिखने के बाद मैं डॉक्टर हिमांशु तलवार, जी हाँ डॉक्टर टूरिज्म, जो एक पेन नेम कमा चुके हैं, सोचा कि अब वीलॉग्स ही स्टार्ट की जाए। और वीलॉग्स ही स्टार्ट करते करते मैं पहली बार अपनी लाइफ में मुंबई के, इंडिया के सबसे पुराने IHM इंस्टीट्यूट, IHM दादर, जिसे अब IHM मुंबई भी कहा जाता है। और वहां पे स्वागत किया मेरा बहुत ही अच्छे से हमारी प्रोफेसर मैम ने। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। आइए आपको ले चलते हैं इस छोटी सी जर्नी पे, जहां आपको देखने को मिलेगा कि कैसे सबसे पुराने एक IHM की शुरुआत हुई। उस IHM को केटरिंग कॉलेज बनाया गया। केटरिंग कॉलेज से कैसे वहाँ के सबसे फेमस, इंडिया के सबसे स्मार्ट होटेलियर्स निकले, जिन्होंने इंडिया की इस लेगेसी को, फूड को, हॉस्पिटैलिटी को आगे लेके गए। और जी हाँ, मजा आ जाने वाला है। अगले 5 मिनट में आपको पता लगने वाला है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी ऑफ IHM मुंबई, यानी कि दादर केटरिंग कॉलेज। तो आइए आपको पहले मिलवाते हैं यहाँ के करंट प्रिंसिपल मिस्टर नीतीश श्रीवास्तव से। सर, कुछ बताना चाहेंगे आप इंस्टीट्यूट के बारे में? As you know, the IHM Mumbai was the first hospitality institute in Asia, established in 1954, and our building was made by famous architect Charles Correa. And this building was seen from the sea, so it was made in a C shape, like cruise ship shape. So it became as a landmark, it became very popular as the Dadar Catering College, because it was situated in Dadar, and Catering College was the name of the building, and it was a landmark. But over the period, so many buildings came up and all that, and our building became very small. And in that time the strength was of 60 students. Now we have intake of 450 students. So it multiplied strength. So we have very less area. So we thought, why not? Our board decided to go into PPP model to develop the institute, and as per location, if we develop it is in a 5-star hotel and any international standard institute, because today the teaching pattern has changed, classroom requirement has changed, audio visual AI enabling has changed total diction and what I mean to say, how to deliver the lectures. So we are working on this model, and we have worked out, and it's so many hotel chains, 6 hotel chains showed interest to develop the institute, and the proposal is sent to ministry for the further development. So we are planning to have 300 room 5-star hotel in the campus, along with the faculty hostel, faculty quarters, hostels and academic. So total 1 lakh square feet area will be for the academic, with the modern equipped classrooms in theater style, which can accommodate 450 students at one time. That's very, very important. So this is the development plan. Wow, 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 sir. Thank you so much for updating us. Thank you so much for sharing all this knowledge. Yes, it is indeed important for all the young chaps of not only this institute, but all the other institutes. You know, guys, institute चलने के लिए, institute चलाने के लिए सबसे पहले रोल होता है प्रिंसिपल का, और उसके बाद आते हैं वहाँ के फैकल्टी और लेक्चरर्स। और जी हाँ, उन सब्जेक्ट से रिलेटेड लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिनके एफर्ट्स की वजह से ये इंस्टीट्यूट यहाँ तक पहुँचा है। तो आपको इंट्रोड्यूस करते हैं रूम्स डिवीजन के लेक्चरर और टीम से। Right, IHM Mumbai has been in the industry for the last 70 years, and since 1954 we are the institute who is establishing standards for the hospitality industry. And today, despite the fact that a lot of other institutes have also come up, hotels still look at us for establishing standards for different aspects of hotel operations. Alumni of this college, and when I was in the college, the year I was graduating, 2004, it was the 50th year of our institute. It was a huge celebration. When later on, when I joined this institute as a teaching faculty, in 2014 we celebrated 60 years. And last year, 2024, we celebrated our 70th year anniversary, and the celebration was grand. It was just amazing, with alumni coming from all over the country, and it was a great celebration. इसके बाद आपको इंट्रोड्यूस करते हैं हम वहाँ के रेस्टोरेंट फूड की टीम से। Neelam Nadkar, a proud alumni of this institute, graduated in 1988. 93 onwards, I became a faculty of this same institute, and till now, I am teaching in this institute, and I am very proud for that. I am actually currently, and generations of the students learn under me, so I am again proud of that fact. And chefs
prominent chefs who learned, like Chef Taha Khan, who's an entrepreneur in the food industry, Chef Pratik Deshmukh, Chef Swanand Hipse. There are many like this whom I can remember as prominent chefs. और जी हाँ, फूड की टीम के इंट्रोडक्शन के बाद आपको लेके चलते हैं F&B की ओर। जी हाँ, F&B जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रेस्टोरेंट, फूड, होटल, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हर तरीके से। IHM Mumbai is strongly connected with its alumni, and the alumni have professed themselves in diverse professions. So we've got students, basically a hospitality training, who have gone into managing retail, who have gone into banking, who have gone into financial sector, other service-related sectors. But there have also been, choreographers, fashion designers, even people who joined the army, even and providing their service based on the basics that they learned. कि ऐसे बहुत सारे जो कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, उनका एक एक्सक्लूसिव कंट्रीब्यूशन है। और स्पेशली कंट्रीब्यूट करते हुए मैं थैंक यू करना चाहूंगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। जी हाँ, ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इनकी एक काउंसिल है जिसे कहा जाता है NCHMCT, उससे इंस्टीट्यूट्स अप्रूव होते हैं, उनसे करिकुलम डिजाइन होते हैं, उनसे फैकल्टी, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स अपॉइंट होते हैं, एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग सो मच for the growth and development of the hospitality of industry of India, not only industry of the India, exclusively the entire tourism vertical of India. Thank you so much everybody for watching this, and I look forward to introducing you to another IHM very soon. Dr. Tourism saying goodbye to you. Bye bye. Ciao.